Hello learners, welcome to Smart Class. Today's class is going to be very important for all students of class 9th. As today we are going to discuss another poem from class 9th English NCERT Kaveri book, and the name of the poem is Gifts of Grace Honoring Our Vocation. So today's class is going to be very important और इसके पहले जो क्लास दिया गया है अगर वो आपने नहीं देखे हैं, so you will find the link in the description box and also on the I button. So you can go and watch those videos, watch those classes. और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं the summary of this poem, the stanza-wise explanation. हर एक stanza, each and every line will be discussed in this class, and the word meanings, the figures of speech, along with the theme and analysis of this poem. Or at the very end, the important questions and answers. Okay, so this class is going to be very important, and if you are not a subscriber of this channel, so you should subscribe and share this video, share this class with your friends. So let us start. This poem is titled Gifts of Grace Honoring Our Vocation. तो vocation का मतलब क्या होता है? What does vocation mean? एक तो हो जाता है profession, understand? So profession जो हम काम करते हैं income के लिए, right? Like we study, we do job, then we do business. So this is what we do for our earning, for income. That is profession. पर अगर ऐसा कुछ काम जो हमारा पैशन है और वो हम ऐसे करें, ऐसे इतना अच्छे से करें कि सोसाइटी का कुछ अच्छा हो जाए. Okay, तो profession is that has only the purpose of earning income, of earning money. But when it is a vocation, so that means it is coming from your heart, it is coming from your passion. So here lies the difference between vocation and profession. Now we will be going to the poem, but before that let us see one very important quotation. Here is every vocation is a gift, every worker is a builder of Bharat. तो हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है भारत माता, तो ये भारत माता किसी एक का सैक्रिफाइस नहीं है. It's built by many individuals. Okay, and who are the individuals? People who are doing their jobs, people who are doing, or people who are sacrificing. Like we find, as you can see in the picture, that there is a potter, there's an electrician, there's a carpenter, there's a boatman, there's a cook. Okay, and there's a mason, there's a person who is stitching, the tailor. So all these persons, there are many others also. So all these persons, they are constituting or they are contributing to the land of Bharat. और ऐसे ही हमारा देश धीरे धीरे एनरिच होते जा रहा है. और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑनरिंग आवर वोकेशन. तो हर एक जो वोकेशन है, हर एक जो प्रोफेशन है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है एक देश को समृद्ध बनाने के लिए, एक देश को एनरिच करने के लिए, वो हम आज देखेंगे. So let us see. Now we go to the summary, a quick summary of this poem. So this poem, Gifts of Grace, celebrates the hard-working people of Bharat and the dignity of different profession. कि हर एक जो प्रोफेशन है वो डिग्निफाइड है, वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस पोएम में. सो दिस पोएम इज एन ओड. इस पोएम को हम बोल सकते हैं कि एक ओड है. ओड क्या होता है? जो कि एड्रेस किया जाता है किसी को. इट कैन बी एन एड्रेस टू अ पर्सन और एड्रेस टू एन इवेंट ऑल्सो. Basically, this is an address to all the professionals, all the hardworking people of Bharat. So that's why we can call that this poem is an ode. And then the poet describes India as a land filled with joyful sounds of workers performing their duties with dedication and pride. तो एक देश का जो GDP आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है? Because people are doing their work. तो लोग काम कर रहे हैं. That means hardworking people are there in India, and that's why India is improving. Okay, and then crafts people. तो एक एक करके अब पोएट क्या किए हैं इस पोएम में? Poet is describing different professions, the different vocations. Like first, crafts person. So crafts people create beautiful objects with colorful designs, while artist जो है वो अपना express करता है, emotion express करता है, dreams को express करता है म्यूजिक के द्वारा. Carpenters भी है, carpenters के बारे में भी बोला गया है. So carpenters work with great precision. इतना परफेक्टली वो लोग काम करते हैं कि वो जैसा हमारा इंडिया का अगर कल्चर देखा जाए, ट्रेडिशन देखा जाए, सो यू विल फाइंड दैट अजंता एलोरा जो केव्स है, उनका जो आर्किटेक्चर है, सो एवरीथिंग इज परफेक्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्किंग पीपल जो इंडिया को एनरिच किया है. सो दिस पोएम इज सेलिब्रेटिंग दोज पीपल. And then boatmen sail into the sea while singing songs and later return with stories of the experience. तो बोटमैन जाते हैं समंदर में,
अपना हेल्थ सिंगिंग सॉन्ग्स, एंड देन दे लेटर रिटर्न विद द स्टोरीज, और अपना कहानी लेके आते हैं फिर। शू मेकर्स, तो एक एक जो प्रोफेशन है एकदम क्राफ्ट पर्सन से, जो कि एक स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन है, उससे लेके एक शू मेकर, द शू मेकर्स प्राउडली क्रिएट फुटवेयर जो हम पहनते हैं दैट सपोर्ट पीपल इन देयर डेली लाइव्स, व्हाइल कुक्स, designers, masons, they also perform their work with rhythm and creativity. तो poet इस हर एक जो प्रोफेशन है, हर एक जो वोकेशन है, इसमें एक चीज ढूंढ पा रहा है, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज रिदम एंड क्रिएटिविटी इन ऑल प्रोफेशन। तो हम क्या सीख रहे हैं इस पोएम से? कि हमें अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहिए, सो दैट देयर वी फाइंड रिदम, क्रिएटिविटी एंड वी कैन कंट्रीब्यूट टू आवर लैंड भारत। Understand? Then the poem highlights that every profession is important and contributes to society. तो हर एक जो प्रोफेशन है इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लिए इन इट्स ओन वे। द रिपीटेड लाइन, और एक लाइन हम देखेंगे बार बार रिपीट हो रहा है ये पोएम में, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, भारत सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये भारत कौन है? दिस भारत इज एक्चुअली एन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द इंडियंस। भारतवासी जो है ना, सो दैट मीन्स द इंडियंस, दे आर एक्चुअली द कंस्टिट्यूटिंग भारत। Okay, and who are these people? Who are these Indians? The Indians are the hardworking people. They are of different professions. तो ऐसे ही हमारा भारत जो देश है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। Understood? Then the poet believes that a person's vocation becomes a part of their identity. और लास्ट में जाके ये बोला जाता है कि एक पर्सन का जो वोकेशन है वो आइडेंटिटी के साथ जुड़ा होता है। जैसे हमारा काम हमारा आइडेंटिटी बनाता है। ओके, किसी एक महापुरुष ने बोल के गया था कि ऐसा काम करके जाओ कि वही आइडेंटिटी बनाए, बिकॉज नाम जो है वो नाम काम से बनता है। सो हियर वी फाइंड दैट अ पर्सन्स वोकेशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी एज शोन इन द लाइन, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ द आइडेंटिटी। तो ये बाद में जाके हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच में एक मेटाफोर बन जा रहा है। ओके, तो ओवरऑल द पोएम प्रोमोट्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल वर्कर्स। जो भी जैसा भी वर्कर्स है सबके लिए रेस्पेक्ट दे रहा है ये पोएम, सेलिब्रेट कर रहे हैं सबको, एंड द सेलिब्रेट आल्सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी थ्रू डिफरेंट वोकेशन। और ये क्वेश्चन बन जाएगा पोएम से कि हाउ डज दिस पोएम सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी? This poem is not written in different stanzas, as you can find that this poem is written in free verse. Okay, इस पोएम में एक्चुअल में कोई राइम स्कीम नहीं है, तो फ्री वर्स में लिखा गया है। Why free verse? Because so that the poet can express his emotions. Okay. The poem starts in this way. I hear Bharat celebrating the varied vocations. I hear those of craftsperson, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. तो vocation का मीनिंग हो जाता है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, पर पहले ही जैसे मैं बताया कि प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट होता है vocation से। क्राफ्ट पर्सन स्किल्ड वर्कर है, और आर्टिजन से आर्टिस्ट एक्चुअली, woven जो बनाया जाता है, मेड बाय इंटरलेसिंग थ्रेड्स, and then myriad is countless, so myriad hues means myriad colors. तो poet actually क्या बोलना चाहता है इस poem में, इस lines में? The poet says that he can hear the joyful spirit of Bharat. How? Through the sounds of people working in different professions. So अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और सबका एक अलग अलग साउंड है। जैसे कारपेंटर जब काम करते हैं तो उनका अलग साउंड होता है, जब मैसन काम करते हैं तो उसका अलग साउंड होता है, हो जाता है, राइट? क्राफ्ट पर्सन जो काम करते हैं तो उनका अलग साउंड। So he is enjoying and he's celebrating. The craftspeople create beautiful objects filled with many colors and artistic designs. The poet admires this creativity and their work also. So ये जो image you can see here, here are two images actually, one of craftsperson, another is of one engineer is there, who is basically दोनों लोग जो है वो क्राफ्ट पर्सन ही है और इंडिया को एनरिच कर रहे हैं, करेक्ट? Then we find that India's beauty lies not only in nature but also in the skills and talents of ordinary people. तो जिनको हम ordinary समझते हैं उनका talent कुछ extraordinary है, और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है। Next we go to the artisans with lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the street. तो you can see in the picture that there is a lute here. Okay, तो इसको बोला जाता है lute. Lute actually एक musical instrument है. So the artisans play musical instrument called lutes and express many emotions through music.
Their music reflects hopes, dreams, happiness and feelings. So all these things are actually some profession, vocation है, और साथ साथ ये हमारा देश का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको एनरिच करते जा रहा है. The songs echo through the streets, filling the environment with joy. पूरा देश जो है, पूरा जगह जो है, उसको joy, happiness से भर दे रहा है. The poet uses music to show the emotional and cultural richness of भारत. तो actually the first line में हम देखें that there we found that how it is contributing to the enrichment or the improvement of Bharat, our land, and here we find that emotional cultural richness of Bharat. ओके तो ये स्टैंजा जो है, ये लाइन जो है, ये सजेस्ट करता है कि आर्ट एंड म्यूजिक ये हमारे देश में और देश का एक ऐसा हिस्सा है जो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, एंशिएंट कल्चर है. राइट. आर्टिजन का मीनिंग देख लेते हैं. आर्टिजन मीन स्किल्ड वर्कर्स, आर्टिस्ट. ल्यूट्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. एंड यू विल फाइंड कि ये जो लाइन है ना, द आर्टिजन्स विद ल्यूट्स ईच हेलिंग वैरिड इमोशन इकोइंग इन द स्ट्रीट, जैसे एक इमेज बनते जा रहे हैं. तो ये इमेज हम सुन पा रहे हैं, जैसे इकोइंग इन द स्ट्रीट, इको हो रहा है. तो जब इको हो रहा है तो ये हमारे सेंसेस के साथ जुड़ा है एंड वी कैन हियर इट. तो इसको हम बोलते हैं ऑडिटोरी इमेजरी. ओके इसको हम बोलेंगे ऑडिटोरी इमेजरी. इमेजरी होता है एक वर्ड पिक्चर, वर्ड से कुछ पिक्चर बनाया जाता है और यहाँ पर वर्ड से ऐसा पिक्चर बनाया जा रहा है जो हम सुन पा रहा है. दैट इज ऑडिटोरी इमेजरी. अंडरस्टूड. देन द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग. तो अब इसके बाद कारपेंटर्स को बुलाया जाता है. द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग देयर जॉब एक्चुअली बिकॉज दे लव देयर जॉब. दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड. तो एक वुड दे दो, एक लकड़ी दे दो, कुछ भी बना देगा और ऐसा सुंदर चीज बना देगा जो हम सपने में भी सोच नहीं सकते हैं. सो दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन. So what do you understand? Carpenters are actually very skilled professionals. Okay, तो एक वुड, एक लकड़ी से कितना अच्छा अच्छा डिजाइन आप भी देखे होंगे ना घर में जो फर्नीचर होता है. So you'll find that there are different kinds of designs. Okay, and that is because of the carpenters. The poet praises carpenters for their skill and perfection. They carefully create useful and beautiful wooden objects with great accuracy. और great accuracy जो है इसी को बोला जा रहा है मैथमेटिकल प्रिसीजन. एकदम परफेक्टली बनाता है, थोड़ा सा इधर उधर नहीं होता है. इधर उधर अगर हो जाता है तो वो देखने में खराब होता है और ऐसा चीज नहीं दिखा जाता है बेसिकली. ओके द फ्रेज मैथमेटिकल प्रिसीजन शोज दैट देयर वर्क रिक्वायर्स इंटेलिजेंस. क्या क्या चाहिए? इंटेलिजेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए और डिसिप्लिन के साथ साथ पेशेंस भी चाहिए होता है. ओके सो इन एवरी वर्क वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पेशेंस. The poet respects carpentry as both an art and as a science. तो carpentry एक ऐसा जॉब है, ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा vocation है जो कि एक आर्ट भी है, कला भी है और साइंस भी है. Understand? Then mathematical precision का मीनिंग देख लो. Perfect accuracy and exactness. Carpenters, you already know, people who work with wood. They are called the carpenters. So in these lines we find that the carpenters are being also celebrated because of their mathematical precision and their intelligence and discipline as well. Okay, next we go. The electricians humming. इलेक्ट्रिशियन जो है हार्मिंग कर रहे हैं. हमिंग मीन्स क्या होता है? मेकिंग अ सॉफ्ट म्यूजिकल साउंड. तो घर में जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो अपना काम तो करते हैं पर साथ साथ एक गुनगुना के गाना गाते हैं. यू फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम. बट एक्चुअली ये सिचुएशन जो है ये भी एक इमेजरी है. द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग. We have to imagine this. इमेजरी है. कैसा इमेजरी है? ऑडिटरी इमेजरी है जो हम सुन पा रहे हैं. So here we will write here auditory also. Okay, this is also auditory imagery. The electricians humming. They get ready for work with cables and wires to brighten our lives. और ये क्या काम करता है? हमारा लाइफ जो है उसको ब्राइटन करता है. So that means a very beautiful imagery. Okay, brighten our lives means from darkness to light. This is the job of the electrician. Okay, how beautiful it is presented. The boatmen gathering their nets from the shore. अब इसके बाद आता है कि boatsmen के बारे में डिस्कस किया जाता है. The boatsmen, they go to the sea and then they come or they return from there with their tales of life at sea. Now look, in these lines actually we find that the poet is celebrating the workers who contribute to society through dedication and hard work. तो electrician बोलो या तो boatman, दोनों के लिए डेडिकेशन और हार्डवर्क बहुत मैटर करता है. द इलेक्ट्रिशियन सोन हमिंग. दैट मींस अब लोग हमिंग कब करता है? लोग गुनगुना के गाना कब गाते हैं? व्हेन दे एंजॉय देयर वर्क. दैट इज वोकेशन.
जब अपना काम तुम एंजॉय करते हो, दैट इज कॉल्ड वोकेशन. ओके, सो इलेक्ट्रिशियन इज ऑल्सो एंजॉइंग हिज वर्क. द इलेक्ट्रिशियंस सॉन्ग हमिंग व्हाइल वर्किंग विद केबल्स. एंड ये ब्राइटन आवर लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक phrase है. It has both literal and symbolical meanings because electrician not only provide electricity but also make life easier and more comfortable. तो ये मीनिंग बनते जा रहा है इसका. Then the poet describes boatmen gathering their fishing nets and sailing into sea while singing songs. The song is a part of life, right? You'll find in most of the vocation, most of the profession, people are singing here. Carpenters, electrician, okay, they're singing. Why? Because they're celebrating. Okay, and their singing creates a cheerful atmosphere and shows their strong connection with their work. Understand? Then after they return, the boatmen वो जब वापस आ जाते हैं, so they share their stories about the experience and adventures. Okay, so together ये दोनों जो प्रोफेशन है, इलेक्ट्रिशियन या तो बोटमैन, they show the beauty and dignity of labor. तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है. The poet admires ordinary workers also and presents their life, their work as meaningful, rhythmic and full of life. इसलिए हमिंग के बारे में बोला जाता है. अंडरस्टूड. अब इसके बाद हम आप नाउ विल फाइंड फिगर्स ऑफ स्पीच ऑन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. एंड अनदर रिमाइंडर फॉर यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, हैव नॉट प्रेस्ड द लाइक बटन एंड नॉट कमेंटेड, सो प्लीज डू. देन वी गो टू द नेक्स्ट. द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. अब शू मेकर्स के बारे में बात होने लगता है यहाँ पर. Why shoemakers are important? Because they affirm the quality of their work. How? For the feet that work. ये जो हम चलते हैं, डांस करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, you can find that Adidas, Puma, there are so many brands, right? और ये actually shoemaker के साथ जुड़ा है. सब कुछ shoemaker के साथ जुड़ा है. Adidas बोलो, Puma बोलो, okay, Woodland बोलो. So that means while you walk, we wear shoes. While you dance, we wear shoes. Michael Jackson का डांस बोलो. There is a very important contribution of the shoe. So shoemakers are very important. How? The poet praises the shoemakers for their skill and dedication. They proudly create strong, good quality shoes, जो कि लोगों को हर एक पार्ट में हेल्प करता है. How? समझ लो कि कोई जब गमबूट पहन के जाता है वर्ड लर्निंग, so there we find that the importance of the gumboots. The poet highlights that even a simple profession like shoemaking is important for society. How? He shows respect and the dignity of labor and reminds readers जो कि हम हैं, that every worker contributes to people's daily lives in meaningful ways. So different actions जैसे कि walking, dancing, running, jumping, all these symbolize the journey and the activities of human life. So that means shoemakers are intricately connected to the human life. ओके, ह्यूमन लाइफ के साथ एकदम इंट्रिकेटली जुड़ा है. सो रिटर्न होम, जब हम घर आते हैं, सो देयर इज अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी एंड बिलोंगिंग. और ये काम जो है कौन करता है? शू मेकर करता है. कैसे? जब हम अपना घर आ जाते हैं अपना शू पहन के, तो एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट है, सेफ्टी है, बिलोंगिंग है. अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ द शू मेकर्स आल्सो इंपॉर्टेंट. इट हैज बीन शोन इन द पोएम. नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट. The delicious singing of the cook or the rhythm of designer, mason is celebrating what belongs to them and to none else. तो अपना अपना जो काम है, अपना जो vocation है, वो अपना ही है. The delicious singing of the cook, चाहे cook का नाम बोलो, चाहे rhythm designer का नाम बोलो, mason का नाम बोलो, so you'll find that what belongs to them they celebrate. वो अपना काम एकदम जी भर के करते हैं. So the poet compares the work of cooks, designers and masons to music and rhythm. A cook's work is called delicious singing. Delicious फूड मेकिंग नहीं, डिलीशियस सिंगिंग बोला जा रहा है. सजेस्टिंग कि कुकिंग इज नॉट जस्ट वर्क बट एन आर्ट. कुकिंग इज एन आर्ट दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. आप जब खाते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन लगता है, राइट? और ये हमें जीना सिखाता है. we are living. Why? Because of food. Understand? So similarly, designers and masons perform their work with skill, creativity and rhythm. तो हर एक जो vocation है, हर एक जो profession है, there is some skill, creativity and rhythm. Okay, and then the poet says that every worker proudly celebrated their own profession and talent. Each vocation is unique,
और ये जो है द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है दैट अ पर्सन्स वर्क बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हु दे आर। जो काम करते हो वो अपना सोसाइटी में अपना पहचान बनाता है। चाहे एक डॉक्टर बन जाओ, एक इंजीनियर बन जाओ, एक मैसन बन जाओ, एक म्यूजिशियन बन जाओ, दैट विल बिकम योर आइडेंटिटी। तो अपना नाम नहीं रहता है, अपना काम रह जाता है। दैट इज व्हाट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। द पोएम एंड्स विद द रिपीटेड लाइन आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग। यहाँ पर भी है आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग विल फाइंड। सो ये रिपीटेशन है जो रिपीट किया जाता है। भारत कौन है? एक्चुअली भारत द इंडियंस हैं। ओके, तो दैट मीन्स वेरी फाइन पर्सनिफिकेशन। भारत जब सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब भारत सेलिब्रेटिंग, तो भारत तो सेलिब्रेट नहीं कर सकता ना, भारत इज अ लैंड। Understand? So this is personification. Okay, understood? Now we come to the figures of speech. अब personification देख लेते हैं पहले। I hear भारत celebrating, भारत is given the human quality of celebrating. Imagery already पहले बता चुका हूं कि woven with colors and myriad hues, जहां पर भी लगे कि कुछ देख पा रहा, कुछ सुन पा रहा, कुछ टेस्ट का फीलिंग आ रहा है, that becomes imagery. यहाँ पर जैसे woven with colors and myriad hues, imagery है। Echoing in the street, ये हो जाएगा ऑडिटरी, इको हो रहा है, ऑलरेडी पहले बता दिया है। द बोटमैन गैदरिंग द नेट्स, ये हो जाएगा विजुअल, ये हम देख पा रहे हैं ना, सो इट विल बी विजुअल इमेजरी। देन रिपीटेशन, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, दिस विल बी रिपीटेशन बिकॉज ये रिपीट हुआ है पोएम एकदम पहले और लास्ट में भी, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ रिपीटेशन। देन सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिज्म क्या होता है, सिंबॉलिज्म क्या होता है और बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये जानने के लिए और एक क्लास दिया गया था ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच स्पेशली, दैट यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। सिंबॉलिज्म का क्या क्या एग्जांपल हमें इधर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि कलर्स एंड myriad ह्यूज सिंबलाइज डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी एंड कल्चरल रिचनेस। वॉइस सिंबलाइज करता है प्रोफेशन को, एक्चुअली ये वॉइस ऑफ द वोकेशन, तो वोकेशन बन जा रहा है वॉइस, किसका वॉइस, अपना अपना वॉइस, जो जो अपना अपना काम में है, जो जो अपना अपना प्रोफेशन में है, उसका वॉइस बन जा रहा है। तो वॉइस बिकम्स अ सिंबॉलिज्म आल्सो एंड इट बिकम्स अ मेटाफोर एज वेल। यू कैन राइट दैट दिस इज अ मेटाफोर आल्सो। ओके, कंपेयर किया जा रहा है। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड लाइक सेलिंग, एस as selling, saying. Then so figures of speech complete. Then after we come to the important questions and answers. So here we come to the important question answers. So here's the first question, what does the poet mean by I hear Bharat celebrating? You can take a screenshot of all the question answers. So Bharat celebrating मतलब the poet means कि spirit of Bharat can be seen and heard. Why? Because Bharat has been seen as living. How? Through the people of Bharat. Okay, that is the meaning of I hear Bharat celebrating. Next question is, how do the craftspeople contribute to the beauty of Bharat? एकदम easy simple question है। तो craftspeople कैसे contribute करते हैं, अपना creativity, अपना artistic skills देके, और साथ साथ you can also add the symbolize, what they symbolize the India's rich culture, diversity, और एक एक जो craft person है, artisan है, उसके बारे में हम लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का। What role do music and sound play in the poem? Music and sound का बहुत important role है इस poem में। You'll find that there are many imageries, actually sensory imagery, then visual imagery, auditory imagery. Okay, so music and sound create a lively atmosphere, जैसे humming of electrician, तो ये atmosphere बना देता है। Song of the boatman, music of artisan symbolize joy, dedication, cultural richness, तो ऐसा आंसर लिखेंगे इसका। Then why does the poet mention different profession? तो different profession के बारे में क्यों बताया जाता है? Different profession के बारे में बताया जाता है because the implication is that every worker is important in society. This is the main purpose actually. Okay, और each vocation is contributing, जैसे मैं पहले बताया, each vocation contributes to the growth, the improvement of our nation. Okay, carpenters को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? You can find here carpenters are very highly skilled workers, जो कि वुडन ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है और मैथमेटिकल प्रिसिजन के साथ काम करता है और ऐसा चीज बना देगा जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ओके, नेक्स्ट वी गो टू द एक्सप्लेन द फ्रेज ब्राइटन आवर लाइव्स। तो ब्राइटन आवर लाइव, इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका दो मीनिंग है एक्चुअली, लिटरल मीनिंग एंड सिंबॉलिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या है कि ब्राइटन कर रहा है मतलब एक बल्ब लगा दिया तो ब्राइट हो गया। ओके, दे ब्रिंग लाइट। अनदर इज दे ब्राइटन आवर लाइव्स मींस दे मेक आवर लाइफ इजियर। गर्मी लग रहा है, फैन चला दिया, एसी चला दिया, सो दिस इज हाउ दे मेक आवर लाइफ इजियर। Then what does the poet suggest through the boatman song? Boatman song and tales, they symbolize courage, adventure and hard work. और इनका जो स्टोरीज है ये रिफ्लेक्ट करता है उनका एक्सपीरियंस को। एंड
this is connected with the profession and life journey. तो हर एक का जो प्रोफेशन है वो लाइफ जर्नी के साथ जुड़ा है. ओके, शू मेकर्स क्यों इंपॉर्टेंट है पोएम में? Because they support people in daily activities like walking, running, dancing, traveling. So this is the normal lifestyle that every person has. Okay, their work helps people move through the life comfortably and safely. So this is the purpose of the shoemakers. Then the next question is explain the line. The voice of the vocation is the voice of the identity. बहुत important question. Star mark लगा लो इधर. Okay. पर्सन का प्रोफेशन जो है वो उनका वॉइस बन जाता है. जैसे मैं बताया, काम रह जाता है, नाम मिट जाता है. ओके, और अपना जो पहचान बनता है वो अपना काम से बनता है. सो वॉइस इज द वॉइस, योर प्रोफेशन इज योर वॉइस एक्चुअली. ओके, so person's profession becomes an important part of who they are. Our work skills, dedication and occupation shape the identity and individuality in the society. तो जब सबके सामने जाके बोलोगे अब मैं ये काम करता हूं, so that is your identity. That is your identity. Okay, understand? Then what is the central theme of the poem? The central theme of the poem is the dignity of labor and respect for all profession. जो कि हम central theme पहले बताए थे. Central theme क्या है poem का? Dignity of labor and respect. कि हर एक प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, और हमें क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए सबको. The poem celebrates hardworking people and highlights unity in diversity through different vocations in Bharat. Understood? So these are some important questions answers. Now, if you have any doubt, you can write in the comment box. And if you have liked the video, like the class, so you should subscribe our channel and please press the bell icon also, and share this class, share this video with your friends. Meeting in the next class with another chapter. Thank you.